Hello friends, this is Team SuperSimplified and today we are here with news analysis for November 2017 week 2. So let's get started, and these are the topics which we are going to cover here: Islamic Banking, Cobots, Shebox, Kambala, National Testing Agency and Project Saksham. So these are some of the topics which we are going to cover today. Now the first news item is India not to pursue Islamic banking. So RBI has recently declared that it is not going to pursue a proposal to introduce Islamic banking in India. Right, so what is Islamic banking first of all? See, Islamic banking or Sharia banking is a finance system which is based on the principles of not charging interest, and charging interest is prohibited under Islam. Okay, Sharia prohibits earning interest, which is called riba, on loan money. So if the bank provides loan to someone, it should not charge interest, and if someone is depositing the money in the bank, they should not avail any interest. So that is the basic principle of Sharia. So this is the main fundamental principle of Islamic banking, and the proposal to introduce Islamic banking in India was first made in 2008 by a committee on financial sector reforms, which was headed by the former RBI Governor Raghuram Rajan. And now recently the news has broken out because someone has filed an RTI, and RBI's response has come. Right, so RBI has expressed difficulty in bringing Islamic banking to India because it says that it is of complex nature. So the complexity is the bank has to furnish the Sharia compliance certificate, which certifies that the bank is not lending to any of the businesses which are involved in liquor or pork or gambling, etc. So these are some of the items which are prohibited under Islam. So bank should not lend its money to the businesses which are involved in these activities. So this kind of certification is required, Sharia compliance certificate. So because of all these kind of requirements, it is considered difficult by RBI, and it has recently told that it is not going to pursue the proposal to introduce Islamic banking in India. Right, so that's about it. Now let's come to the next news item. There was a article in the Hindu on Cobots. So let's see what are Cobots. So Cobots are actually collaborative robots. These are another variety of robots, right? So small collaborative robots or cobots are gaining currency across the world, as also in India. And several firms like Bajaj Auto or Aurolab, some of the automobile manufacturing companies, are benefiting from the adoption of cobots, and they are planning to add more on their shop floors. So these robots are not like traditional robots which perform a standalone task, right? It's not like that. They collaborate with the human beings. So it's like this: if there is a task consisting of 3 steps, then step 1 is performed by the human being, second step is performed by the robot maybe, and the third step is again performed by the human beings. So it is going to collaborate with human beings. Okay, so what are the benefits here from cobots? First thing is it will partner in human machine teams. So cobots are specifically designed to work along with human beings on tasks which cannot be fully automated. Okay, and the second point is relief from risky activities. The cobots can fulfill those tasks which could be risky for people, okay, such as safely transporting some sharp or pointed or hot workpiece or dangerous bolting work. So that can be taken up by the cobots, the machines. And they are smart, and the behavior is also safe. Just in case you touch it while working, then it will stop immediately so that you are not harmed. Okay, and it is flexible and teachable, so programming is very easy in these machines, and it is usable anywhere. It can be mounted on a horizontal or a vertical surface or on the ceiling also. So they are very flexible. So this is why they are gaining currency in the world today, right? So that's about the cobots. Now let's come to the next news item. Musa Paramjeetiana, new species of wild banana discovered in Andaman and Nicobar. So Musa Paramjeetiana, it was discovered in Andaman and Nicobar recently in Krishnapuri forest, and it is named Paramjeetiana. This is a unique name. It is named Paramjeetiana in the honor of Mr. Paramjeet Singh, who is the director of Botanical Survey of India. And this plant grows to a height of 9 meters, and it bears an edible sweet and sour tasting fruit. So मीठा भी है और साथ में वो खट्टा भी है. And it is boat shaped and has numerous bulb shaped seeds. Okay, and its fruits and seeds have ethno-medical importance for the local community. तो वहाँ पे मेडिकल यूज़ है उसका, और साथ में उनका जो कल्चर है उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस है. कई रिचुअल्स में और ट्रेडिशंस में इसका यूज़ किया जाता है. देन द कंजर्वेशन स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि सिर्फ आइलैंड पे 2 जगह पे मिलता है, दैट टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट्स इन दोज लोकेलिटीज़, राइट? सो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. मूसा परमजीतियाना. And in 2014, another banana species was identified on this island, which is Musa indamanensis. Okay, this was also discovered on the same island, right? So let's come to the next news item. Shebox portal launched for both public and private sector. So what is Shebox? Shebox is sexual harassment e-box.
sexual harassment e-box. Okay, and it is basically a web portal, and it is launched by the Ministry of Women and Child Development. Menaka Gandhi is heading this ministry presently, and it is an online complaint management system for women to lodge complaints on sexual harassment at workplace. And the aim is to effectively implement the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, and it can be used by both private and public sector. So this Shebox was in news few months back also. That time it was released only for the public sector employees. Now it has been extended to private sector also, right? So employees of both private and public sector can use this portal if the need arises. Okay, and once the complaint is lodged online, it will be forwarded to the local complaint committee, which is to be constituted by every employer. Okay, it is mandatory. And this is all fine, this is all good, it is a right step in the right direction, but there's one concern that it addresses only the women working in the organized sector, and most of the workforce, around 90% of the workforce in India, works in the unorganized sector, and the people working in the unorganized sector, the women working in the unorganized sector, are actually more prone to more vulnerable to these kind of threats. Okay, so what is to be done for them? So government has to think in that direction also. Yeah, it is a good step, but it addresses only a small portion of the problem. Okay, now let's come to the next news item. Cabinet approves creation of National Test Agency. So the Union Cabinet has approved creation of National Testing Agency as a society registered under Indian Societies Registration Act 1860. And the objective is to conduct entrance exams for higher educational institutes. So this agency will be solely responsible for conducting entrance exams for higher educational institutes, which are being conducted presently by different agencies. For example, CBSE conducts few of the exams, and there are some exams conducted by some other agencies. Okay, so it will be an autonomous self-sustained body, and initially it will take over those exams which are currently being conducted by CBSE as a pilot project, and gradually it will take over all such examinations, and the test will be preferably conducted in online mode, and plans will be drawn to expand the reach of network in rural areas, and necessary training will also be provided to the students. Okay, and NTA will be given an initial grant of 25 crores from the government. Okay, this is for initial setup and all, and thereafter it will be a self-sustaining body. So whatever fees it collects from the students for registering for the examination, that same thing will be used for sustaining itself. And NTA will be chaired by an eminent educationist, which will be who will be appointed by the Ministry of Human Resources and Development, right? And it will bring higher reliability, higher standardization, balanced examinations, etc. And it will relieve CBSE and AICT from the burden, and they can focus on their core activities, right? Now let's come to the next news item. So first project under Prime Minister's Ladakh Renewable Energy Initiative Commission. It is actually a 1.5 megawatt small hydro power plant in Dras, Kargil in Jammu and Kashmir, and it has become the first project under Prime Minister's Ladakh Renewable Energy Initiative. So this is a program launched by Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister's Ladakh Renewable Energy Initiative, and this is the first project under that scheme. तो ये 1.5 मेगावाट का एक छोटा सा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है वहाँ पे, जो करगिल को पावर देगा, ठीक है? And the plant will power the Dras town in Kargil, and power from BRS small hydro power plant would be sufficient to meet the normal power requirements of 1000 families. ठीक है, तो 1000 families की requirement के हिसाब से वो 1.5 megawatt का जो plant है वो sufficient है. And it is built under Prime Minister's Ladakh Renewable Energy Initiative. And which ministry is in charge of the execution? Ministry of New and Renewable Energy. It is implementing this project. And what is the aim here? Aim is important to replace the use of diesel and reduce greenhouse gas emission in the region. And under this project, actually, the approach would be to meet the power requirements through small or micro hydel power plants or solar photovoltaic power projects. Okay? So this is the aim here, to avoid these dirty fuels like diesel. Now let's come to the next news item. Next news item is IPPB, India Post Payment Bank, to become operational in 650 districts by April 2018. In next 4-5 months to come, it will be operational in 650 districts all over India. So these banks will be linked to 1.55 lakh rural post offices for their operation. तो ये बहुत ही समझदारी का काम किया है सरकार ने, because there are so many post offices in every rural remote area. You will find a post office at least. There may not be electricity, there may not be any other facility, but post office will always be there, right? So these banks will be linked to these post offices for their operations, and this will be the largest banking network in the country. So you must be knowing that India Post has been given the banking license by RBI, so they will be opening their own banks, but these are not normal banks, these are payment banks. Okay,
And payment banks are different. We'll see how they are different from the normal banks. So what is IPPB, India Post Payment Bank? IPPB has been set up as a public limited company under Department of Post, and it leverages the vast reach of postal network in the country. Very clever step, and this will further boost the financial inclusion in the country by reaching the unbanked and underbanked. And this will also increase the financial literacy in the country. So when people start using the banks and they start understanding the importance of savings and other financial instruments, then the level of financial literacy will increase in the country, right? So India Post Payment Bank will help in achieving these objectives. And what are payment banks? This is very important. इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है. So it is a new model of banking in India which was conceptualized by RBI. And payment banks activities are confined to acceptance of demand deposits. Demand deposits क्या होते हैं? दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं आप जो बैंक में करते हैं. एक टाइम डिपॉजिट होता है और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कि दैट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम योर अमाउंट विल बी लॉक्ड इन. यू कैन नॉट ड्रॉ इट. इफ यू ड्रॉ देन देयर विल बी सम पेनल्टी यू हैव टू पे. ओके, सो दैट इज टाइम डिपॉजिट. और दूसरा डिमांड डिपॉजिट होता है जैसे सेविंग बैंक, नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट्स होते हैं. यू कैन डिपॉजिट योर मनी और जब उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, बट जब भी आपको चाहिए तो बैंक आपको देगा. तो ऑन योर डिमांड बैंक विल प्रोवाइड योर मनी. सो वो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है. देन रेमिटेंस सर्विसेज की अगर कोई जो माइग्रेंट है अगर कहीं दिल्ली में चला गया, किसी बड़ी सिटी में चला गया, तो वहाँ से अगर वो घर पैसे भेजता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू वो रेमिट किया जा सकता है उसको, जो घर वाले गाँव में रहते हैं, ठीक है. एंड इंटरनेट बैंकिंग वगैरह प्रोवाइड करेगी ये, बट नॉट लेंडिंग सर्विसेज. लोन नहीं ले सकते आप इन बैंक से. सो दे आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड लोन वाली फैसिलिटी है, नहीं दे सकते हैं. दैट इज वाई दीज आर नॉट नॉर्मल बैंक्स, दो दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बट दे आर पेमेंट बैंक्स. अलग तरह के बैंक्स हैं, ठीक है. न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग. एंड इट अलाउज टेलीकॉम कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स एंड अदर्स टू वेंचर इन दिस फील्ड. सो एयरटेल ने भी अपना पेमेंट बैंक निकाला है, पेटीएम भी घुस गया इस मार्केट में, ठीक है. तो इस तरह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी रीच काफ़ी दूर तक है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो वो लोग इसमें आगे आएँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं सो दैट गवर्नमेंट की रीच जो है वो हर आदमी तक पहुंच सके, ठीक है. एंड पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 1 लाख पर अकाउंट ओनली. सो आप 1 लाख से ज़्यादा उसमें पैसे जमा भी नहीं कर सकते हैं, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन है. एंड दे कैन इशू एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स बट नॉट क्रेडिट कार्ड. लोन भी नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बैंक्स के थ्रू, एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पेमेंट बैंक्स. सो IPPB bank to become operational in 650 districts by April 2018. So it will give a big boost to financial inclusion and financial literacy in India. Now let's come to the next news item. Supreme Court refuses to ban Kambala. What is Kambala? काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रह रहा है ये continuously. So Kambala is basically a traditional buffalo race in the coastal parts of Karnataka. So Supreme Court has refused to pass an interim order to stay an ordinance allowing कंबाला. सो जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, अलाउ किया है कंबाला को उस ऑर्डिनेंस के थ्रू, एंड प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिला है उसको. उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया गया पीटा के द्वारा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा जो एजेंसी है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू स्टे दैट ऑर्डिनेंस, ठीक है. हाउएवर इट विल चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस किसने पास किया था? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, टू अलाउ कंबाला, ठीक है. सो पीटा का कहना यह है कि कंबाला वॉज इनिशियली ऑफ रिचुअलिस्टिक नेचर विच वॉज ऑर्गेनाइज टू थैंक गॉड फॉर कीपिंग द एनिमल्स डिजीज free, which was good, but now it has become an organized sport, okay. And PETA alleges that animals face hardships and torture because of this ritual. So that is what they say, ठीक है. And there was a similar controversy some time back on Jallikattu, a similar sport in Tamil Nadu, okay. Now let's come to the next news item. IEAG MR group commends India on MR vaccination progress. So the India expert advisory group on measles and rubella, ये डिजीज़ काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रह रही हैं, हैज़ कमेंडेड इंडिया ऑन प्रोग्रेस ऑफ मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन. तो इंडिया का जो कैंपेन है उसको काफ़ी तारीफ मिली है. So what is the campaign? MR vaccination campaign जो इंडिया में चल रहा है, measles rubella vaccination campaign. The campaign is the largest ever campaign against MR, measles rubella, which is targeting 41 crore children across the country. And children will be given a single shot of MR vaccine free of cost, irrespective of their previous vaccination status or disease status. ठीक है. And children in the target group are aged between 9 months to 15 years. तो इन बच्चों को मिलेगा ये vaccination. And 2 doses of measles vaccine fully protect the children against measles infection, ठीक है. And measles is a deadly disease
इट इज़ हाईली कंटेजियस एंड स्प्रेड्स थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, तो इस तरह के रैशेज आ जाते हैं बॉडी में मीजल्स के दौरान। एंड रूबेला जो है इट इज़ नॉट अ डेडली डिजीज लाइक मीजल्स, इट इज़ अ माइल्ड इन्फेक्शन ओनली, ठीक है, बट इट हैज़ अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ इन्फेक्शन अकर्स इन अ प्रेग्नेंट वुमन। अगर प्रेग्नेंट वुमन को इन्फेक्शन हो जाता है देन इट हैज़ सीरियस रेमिफिकेशंस बिकॉज इट कैन कॉज कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम विच विल हार्म द आइज, ग्लूकोमा हो सकता है इसमें, और ब्रेन को डैमेज हो सकता है, ईयर्स को डैमेज हो सकता है, जो फीटस है उसको ये सारी हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। APEC summit held in Vietnam. APEC जो है that is Asia Pacific Economic Cooperation Summit and it was held in Da Nang in Vietnam. Okay, and the theme of this year was creating new dynamism, fostering a shared future. And leaders from 21 Pacific Rim countries attended this meeting. 21 Pacific Rim countries जो है वो इसके members हैं, उन्हीं के leaders ने इसको attend किया. And some points about APEC. APEC was established in 1989 and its headquarters is in Singapore. Okay, and the aim is to leverage growing interdependence of Asia Pacific region's economies and promote free trade in the region. तो इस तरह के मल्टीलेटरल ट्रेड पैक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसमें से APEC भी एक है। एंड इट इज़ अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम ऑफ 21 पैसिफिक रिम कंट्रीज दैट प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। तो पैसिफिक रिम क्या है, ये बीच में ये पैसिफिक ओशन है, उसके आसपास में जो ये कंट्रीज़ रहते हैं इनको पैसिफिक रिम कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। सो ये 21 कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्ट हैं। इंडिया उसका पार्ट नहीं है क्योंकि वैसे भी इंडिया पैसिफिक उस रीजन में नहीं है, और साथ में इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है, इट हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस राइट नाउ सिंस 2011 एंड इट इज़ सीकिंग मेंबरशिप। एंड दीज कंट्रीज कलेक्टिवली अकाउंट फॉर नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड 57% ऑफ द GDP। सो आधी दुनिया है यहाँ पर, ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। APEC जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। निर्भय मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली। कुछ रिसेंटली टेस्ट फेल हुए थे इसके, तो उसके बाद अभी सक्सेस मिली है, तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम फॉर अस, इट इज़ अ सक्सेसफुल मिशन। सो निर्भय मिसाइल जो है इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सो हर एक वर्ड आपको याद रखना है, लॉन्ग रेंज एंडोरेंस इसका ज़्यादा है, और सबसोनिक, सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या होता है, देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उसको बेस मान के चलते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड से कम अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, किसी मिसाइल की स्पीड है, तो उसको सबसोनिक बोला जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, और अगर उसके 5 गुना से भी ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक, ठीक है। और जो साउंड की जो स्पीड होती है उसको मैक नंबर से डिनोट किया जाता है, तो 1 मैक का मतलब होता है इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर किसी का 1.5 मैक है, मैक नंबर 1.5 है, तो उसको बोला जाएगा सुपरसोनिक, और अगर किसी का 1 मैक से कम है तो उसको बोला जाएगा सबसोनिक। फॉर एग्जांपल 0.5 है, 0.5 मैक, तो इट इज़ सबसोनिक, ठीक है। तो मैक नंबर से ये डिसाइड होता है, और अगर ग्रेटर देन 5 मैक है देन इट इज़ हाइपरसोनिक, ओके। एंड द स्पीड ऑफ निर्भय इज़ अप टू 0.7 मैक, 0.7 मैक इज लेस देन 1 मैक, तो क्या है ये, सबसोनिक, ओके। सो स्लो स्पीड प्रोवाइड्स एजिलिटी एंड इंश्योर्स एक्यूरेट टारगेटिंग। स्लो स्पीड ऐसा नहीं कि उसका डिसएडवांटेज है, उसको एक पर्पज़ के लिए स्लो स्पीड रखा गया है, सो दैट इट प्रोवाइड्स एजिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और उसको कभी भी आप मैन्यूवर करके उसका कोर्स चेंज कर सकते हैं। और एल्टीट्यूड जो है वो काफ़ी कम एल्टीट्यूड मेंटेन करके भी अपने टारगेट तक पहुंच सकती है, एज लो एज 100 मीटर्स। सो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है इसमें रडार की नज़रों से बचने के लिए। एंड ट्राइड इसका हम अचीव कर चुके हैं, इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम द लैंड, सी एंड एयर। सो ट्राइड इज अचीव्ड इन दिस केस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द निर्भय मिसाइल। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि क्रूज मिसाइल। सो 2 तरह के मिसाइल्स होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होता है वो आपका एंड मोमेंट तक आपका कंट्रोल्ड रहता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इट इज़ लाइक अ प्रोजेक्टाइल, की जैसे आप पत्थर फेंकते हैं उस तरह से होता है। तो आप उसको एक बार लॉन्च करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, तो दैट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल का ऐसा होता है कि वो ट्रैवल करते करते अचानक से आप उसका कोर्स चेंज कर सकते हैं, और उसको आप एक डायनेमिक टारगेट पे भी हिट कर सकते हैं क्रूज मिसाइल्स को। और अग्नि वगैरह जो है हमारे वो कौन से हैं, क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, प्रोजेक्ट सक्षम। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट सक्षम? इट इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट टाइम बाउंड अपस्किलिंग एक्सरसाइज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम इनिशिएट किया गया है, उनको सक्षम बनाने के लिए इनिशिएट किया गया है, ठीक है। एंड द एम हियर इज टू अपग्रेड द स्किल सेट्स ऑफ 13 लाख स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स विद अ सिंगल ड्राइव स्पैनिंग 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें रेलवे ने यह ट्राई किया है कि 9 मंथ्स में हम अपने सारे वर्कफोर्स, जो 13 लाख का हमारा वर्कफोर्स है, सबको उनके क्षेत्र में जो भी रिलेवेंट ट्रेनिंग है वो दे के हम उसको सक्षम बनाएं, लोगों की जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करें, उनके जो प्रोफिशिएंसी लेवल है
अपने अपने फील्ड में उसको इम्प्रूव किया जाए। एंड इट इज़ अ 9 month प्रोग्राम विच विल स्टार्ट इन जनवरी 2018 एंड इट विल गो ऑन टिल सितंबर 2018। रेलवे जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, सो इट इज़ गुड स्टेप टेकन बाय द रेलवे। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। सेकंड मीटिंग ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर ये न्यूज़ है। So the meeting was chaired by Union Home Minister Rajnath Singh and it reviewed the development proposal plans and detailed master plans for the holistic development of 9 islands। तो जो islands हैं उसमें भी डेवलपमेंट करने की काफ़ी प्रयास चल रहे हैं अभी प्रेजेंटली, और जो 9 islands हैं जिसके ऊपर फोकस है अभी प्रेजेंटली आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का, वो हैं 4 अंडमान निकोबार में, स्मिथ, रॉस, लॉन्ग एंड एविस। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो इसको याद रखना है। एंड 5 इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 5 हैं, मिनिकॉय, बंगारम, तिनकारा, चेरियम एंड सुहेली। सो ये जो 9 आइलैंड्स हैं इनको डेवलप किया जाएगा, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का ये प्लान है, और इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और साथ में जो वहाँ पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसको बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो उसका सेटअप अभी रिसेंटली किया गया था, कुछ ही महीनों पहले, जून 2017 में। एंड दिस आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इज एक्चुअली चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। एंड मेंबर्स कौन है इसके? जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं उनके सेक्रेटरीज हैं बेसिकली। सो कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, देन सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म एंड सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। तो ये सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। गवर्नमेंट टू अडेप्ट लैंड पूलिंग मेथड फॉर एयरपोर्ट्स। सो ये गवर्नमेंट ने एक और इनोवेटिव तरीका निकाला है, क्योंकि क्या होता है कि लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा हर्डल है। कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसमें लैंड एक्विजिशन एक काफ़ी बड़ा हर्डल है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। और ये जो 2 इश्यूज़ हैं इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में चले गए हैं, और ये रुके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से बैंक्स भी इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि बैंक्स ने उनको लोन दिए थे ये सोच के कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, फिर ये कमाना शुरू करेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे और ये फिर लोन वापस करेंगे, बट लोन वापस नहीं हुआ। सो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम ओरिजिनेट होते होते एक रिपल इफेक्ट की तरह पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी थोड़ा समझ गई है कि अभी इसको कैसे टैकल करना है, तो ये एक और मेथड उन्होंने अपनाया है कि लैंड पूलिंग किया जाएगा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। एयरपोर्ट्स के लिए अभी पहली बार कर रहे हैं, बट अर्लियर इट वॉज यूज्ड फॉर अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। So Union government is working in adopting land pooling methodology as an alternative mechanism for development and expansion of airports। ठीक है, the aim is to overcome the challenge of land acquisition। तो हो क्या रहा है कि पैसेंजर फुटफॉल इज़ इंक्रीजिंग ऑन ऑल एयरपोर्ट्स, एयर ट्रैवल बढ़ रहा है अब इंडिया में, और गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है उड़ान स्कीम, उसके बाद तो और भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं। छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं, टियर 2 सिटीज़, उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है, तो एयरपोर्ट्स का जो यूसेज है वो बढ़ेगा और एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज द लोड विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, इट इज़ एक्सपेक्टेड। बट मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द सिटीज़, सो वहाँ पे एक आपका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम आती है, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते फिर। ठीक है, सो लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, तो आपका एयरपोर्ट पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो गया, तो उसको क्या करना है? उसके लिए अंडर द मॉडल द लैंड ओन्ड बाय डिफरेंट पीपल around the airport will be pooled together and the owners will get back a certain portion of the land in the developed area whose value will be much higher than the value of the original land holding, right? So ये एक इनोवेटिव तरीका सोचा है गवर्नमेंट ने, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिलेगा और एग्जीक्यूशन टाइम जो उनका है वो कम होगा। लास्ट वीक आई थिंक हमने कवर किया है, अक्टूबर के करंट अफेयर्स में या नवंबर फर्स्ट वीक में हमने कवर किया है कि उड़ीसा ने भी लैंड पूलिंग सिस्टम अपनाया है। उन्होंने क्या किया कि प्री अप्रूव्ड लैंड जो है सारे अप्रूवल्स के साथ और सभी बेसिक एमिनिटीज़ के साथ एक पूल क्रिएट कर दिया है, और जो कंपनीज वहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट द गवर्नमेंट, और वहाँ पे वो अपना जो भी लीज या जो भी लैंड खरीदना है वो करके अपने फॉर्मेलिटीज़ पूरे करके वहाँ पे अपना सेटअप लगा सकते हैं। सो पॉस्को जैसी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी कि आपने बाहर के एक कंपनी को बुलाया क्या और उसके बाद वो आए यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये सब इशू देख के फिर उनका लॉस हो जाए। तो इंडिया की जो इमेज है वो ख़राब होती है इन सब चीज़ों की वजह से। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विथ दीज इनोवेटिव आइडियाज़, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। So India's second technology and innovation support center will come up in Chennai. ठीक है, TISC, India's second technology and innovation center, and this is being set up as an agreement between the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industries, and Anna University in Chennai. So इन दोनों के बीच का एक collaboration टाइप का है, and the center is a setup under World Intellectual Property Organization (WIPO's) TISC program. And India's first center was set up in Punjab. Okay, and objectives क्या हैं TISC के? To increase the availability of scientific and technical information in developing countries to help local researchers improve the quality of their research. ठीक है, तो वीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एजेंसी, ये बेसिकली कॉपीराइट के एरिया में काम करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये अवेयरनेस कम होती है,
सो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसको पेटेंट कराया जा सकता है, बहुत सारे कॉपीराइट वायलेट होते हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, ठीक है, और लोगों को प्रोसीजर मालूम नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इन सेंटर्स के थ्रू, एंड इट विल हेल्प द लोकल यूजर्स क्रिएट, प्रोटेक्ट, ओन एंड मैनेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू पेटेंट डेटाबेसेस एंड साइंटिफिक जर्नल्स। ओके, so that's about TISC, Technology and Innovation Support Center in Chennai. Now let's come to the next news item. India to become world's largest sulfur dioxide emitter. तो ये एक और न्यूज़ आइटम है. So according to a study by University of Maryland in US, India is overtaking China to become world's largest emitter of anthropogenic SO2, human created SO2. So the SO2 emissions are generally product of coal fired power plants or coal burning factories. So India's SO2 emission has increased 50% since 2007, as India has opened new thermal power plants to meet its energy requirements, but it has not taken emission control measures. And on a contrary, the levels in China have dropped by 75% because of the emission control measures. ठीक है, एंड द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम नासाज ऑरा सैटेलाइट. उनकी एक सैटेलाइट है नासा की विच डिटेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उससे डेटा लिए गए, एंड एन एस्टिमेट फ्रॉम द इन्वेंट्री ऑफ फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा इन द कंट्री. तो और एक ये भी एस्टिमेट लगाया कि इतनी फैक्ट्री हैं कंट्री में, इतने पावर प्लांट हैं, इतने ऑटोमोबाइल है, तो कितना SO2 एमिशन होगा उसमें से, ठीक है. तो दिस इज एन अलार्मिंग थिंग फॉर इंडिया एंड वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन इन फ्यूचर. एंड चाइना एंड इंडिया आर वर्ल्ड्स टॉप कंज्यूमर्स ऑफ कोल, typically contains up to 3% of sulfur, और सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो रिस्पॉन्सिबल है मेनली एसिड रेन के लिए, ठीक है. So that's all guys, that's all in this week's current affairs in the week 2 of November 2017, and we are not only bringing current affairs, अभी इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम करेंगे और अक्टूबर मंथ के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम, और इसमें से भी हम MCQs फ्रेम करेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व देम. इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2018 और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन, आप मिस कर देंगे चीज़ों को. एंड प्लीज़ शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, और जहाँ भी आप किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, एंड वी विल सी यू सून विद अनदर लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल.